Good afternoon, everyone, and welcome to the session. Just to give you a brief, Mr. Vijai Mantri is a seasoned finance professional with over 13 plus years of experience in asset management and wealth advisory. He is currently the founder and chief investment strategist of Vijai Mantri Financial Services Private Limited. So over to you, sir. So thank you very much, everyone, for logging in. Really appreciate your time. And this is a second we are doing fixed interval, because what happens that even if you don't have something interesting to say, but if you're doing it, it put unnecessary pressure on you to create some data which is perhaps not needed. So what we intend to do going forward is that we'll keep doing this kind of initiative where we'll share some data with you guys. Okay. So welcome once again to all of you, and let's start. Here is the first slide. I'm showing it to you guys. So hope you can see this. Okay. So somebody, not me, somebody before the T20 World Cup asked leading four AI six question: Who's going to win the toss? Who's going to bat first? Who will be the winner? Scorer, who will take highest wicket, and who will be man of the match. And these are the numbers for various. So red is they got it wrong, and black is they got it right. So one AI got 1/3 right, two got only one right. Gemini got out of six two right, and ChatGPT also got out of six two right. But what ChatGPT is that this highest run scorer was Virat Kohli, and man of the match with Virat Kohli. And Virat Kohli is already declared his retirement from the T20 when India won the T20 World Cup last time. So this is what AI has done to you. Second, I would like to show here is this. GPT, what are the best 5 mutual fund to invest in India? And it gave me these funds, 1, 2, 3, 4, and 5. And it gave the rationale, it gave the category, all kind of stuff. 1 minute later at 5:14, I asked ChatGPT, just give me the names of the fund, don't give me anything else. And it again gave me 5 fund. But out of these 5 fund, 2 fund got replaced. Bandhan small cap remain Bandhan small cap. Motilal Oswal remain Motilal Oswal. But HDFC Flexi Cap got swapped with something else, and ICICI Fund got swapped with something else. So out of 5 fund, 2 fund got changed in just 1 minute. The point I'm making is that investing is future looking. AI tools are very good at analyzing past data, but they are very bad at predicting. We have seen 2 incidences where how horrible they can go. So use AI to look at past data, past behavior, past thing, but keep in mind that investing is future looking, and it is just not possible for AI to look at these data point and predict to you what will happen going forward. So just keep that in mind. Use AI with pinch of salt and not for predictable purposes. Now I'll share something very interesting with you guys. And this is very profound change happening in the Indian and mutual fund industry. If you look at total listed stock on NSE, there were 6,584 stocks. And how many stocks delivered more than 25% CAGR over a 5-year period out of this 6,584 stock starting every calendar year? So surprisingly, 3,070 stock deliver more than 25% CAGR for a 5-year period. So that means approximately 47% of the stock has delivered more than 25% CAGR over a 5-year period. And if you ask how many stock got repeated, because there are some stock which came multiple time in this 5-year rolling return basis. So there were approximately 12,444 opportunities for the market participant to generate 25% CAGR for a 25-year period. Now let's understand. The question is that how many of your fund has delivered these kind of return, and if it's not delivered, why? We'll go deep dive
into this to understand what is happening. And again, I'm saying this data point is not created by me. This is someone who has put this on the social media. I was watching the video, and while watching the video, I took the notes of what was there in the video, and then I kept the note in my diary. And after some time, I forgot it, and then I was looking at my diary. A few weeks later, I discovered this data point, but by that time, I forgot who was created this video. If anybody can tell me who is the person who's created this video data point, I would like to give credit to that person. And similarly, same data came from the same person. So once a company reached 10,000 crore market cap in India, how many of these companies delivered more than 25% CAGR? So only two companies in India delivered 25% CAGR for a 5-year period once they reached 10,000 crore market cap. How many companies delivered more than 25% CAGR over a 5-year period once they reach a 50,000 crore market cap? Now, none of the Indian company, once they reach a 50,000 crore market cap, has delivered 25% CAGR for a 5-year period. Very, very important data to keep in mind. This is a very different from what we are witnessing in US market. In US market, large companies has delivered much better investment performance like Mega 7. But in India, the story is very, very different. So just keep that thing in mind when you look at analyzing the funds, when you look at analyzing the stock, when you look at the wealth creation journey. And I will talk more about this, but this was the context. And if you look at this data point, this was taken a month back. And if you look at this data, then what you see that BL delivered 70% return, Shriram delivered 50. This is a 1-year return of Nifty 50 stocks. And Nifty 50 delivered, index fund delivered 9.25% return. Large cap category average delivered 9.75% return. But these stocks delivered much lesser return than the Nifty 50. And most of the clients' portfolio was overweight. He was considered blue chip of the world. But look at Shriram. I don't know how many you had a Shriram overweight, how many had a Hindalco, how many had a ONGC, Maruti, L&T in their portfolio. But many of had Trent, TCS, Tech Mahindra, Indigo, Asian Paint, Bajaj Finservice, HUL, Eternal, Kotak. And I'm not at all saying that these company will not come back in future, but I'm saying a very different thing. I'm saying that the skill required to pick right stocks is going to be very, very different going forward. And even if you look from historical perspective, fund deliver very decent investment performance because most of the fund was overweight on HDFC and HDFC Bank. And HDFC and HDFC Bank for last 30 years delivered outstanding investment performance. So suppose you're actively managing fund, and if you're overweight on HDFC Bank and HDFC, your returns will be looking very good. The moment HDFC and HDFC Bank stop underperforming or stop outperforming, most funds started struggling. So it's a very, very interesting take. And I'll leave this data or this narrative in front of you. Interpret in your own way. But if you read any insight more than this, I'm more than happy to answer that. This slide I showed earlier as well, but it is very important to look at this slide once again. Here is why most direct stock investors don't make money. Why they don't make money? Because the profit pool listed companies keep changing. So if you look at profit pool in 2010, this is how the profit pool got distributed. 2015, this is how it got distributed, 2020 and 2025. Suppose you look at PSU Bank, they were around 11. I think Saurabh Oja is just slicing, so please don't allow them to do this kind of things. Sanika, स्क्रीन पे लिख रहे हैं वो लोग स्क्रीन पूरा खराब हो रहा है Yes, sir. suppose so don't allow these kind of things please. So if you look at PSU Bank 10.5% 11% with the profit share इसको रिमूव कर सकते हो क्या तुम अभी I'm doing that only, so just and don't give the option to people. Like PSU was 11%, it became 9% and became 0% in 2020.
And this was the time when everybody abandoned PSU, and then PSU now became 12%, delivered outstanding investment performance. Now look at IT. It was 8.1% in 2010, 14% in 2015, and 24% in 2020. What does it mean? That every 4 rupees, out of every 4 rupees, approximately 1 rupee was earned by IT company, and everybody was extraordinary bullish on IT company at that time. And then let's see what happened at 8.5%. Look at FMCG company, 3.5%, 5.2%, 10.2%. And everybody was saying buy clean, great companies, and then has dropped to 3.8%. You could look at any sector of the economy. Let's look at cement company, 2.6, 1.3, 4.2, 1.1. Look at hospitality diagnostic center, 0.1, zero point 0.2, zero point 0.4, zero point 0.5. It means that hospitality share has gone up by 5 times in during this period. Same with hotel industry. Specialty chemical 1%, zero point 0.8 during COVID time became 3.2, became darling of most of the people. And then we have seen that this company has not come back to their prices of 2000, 2001, 2020 and 2021. Right now it is 1.1%, 1% only. So the profit pool keep changing because people's behavior keep changing, people's buying habits keep changing, underlying economy keep changing, and because of this, the profit pool keep changing. What happens when people create the portfolio? They look at what is high earning growth at that particular moment, but then the economy changes and they kept holding the stock which they bought. So it is not that direct the stock investor, when they buy the stock don't go up. The stock most of the time go up, but when the underlying economy changes, the profitability changes, the stock prices stop, the stock, start underperforming, and they are left with no other option to hold because no one want to sell the stock in which they are not making money. So this is a very interesting perspective to keep in mind. Uh, and these are uh, Sensex stocks of 85, 90. Sensex actually started in 1986. So if you look at Sensex, only 5 stocks survive. HUL, ITC, Reliance Industry, L&T, and one more company. Only 5 companies survive in since 1985 till 2025. So they are, in my opinion, they are no stock to buy forever. Oracle was a darling of the market once upon a time, no longer. And here is again a very interesting data on the blue chip companies. If you look at data for, if you look at blue chip company, I took 4, 5 of them, 6, 7 of them. And if you look at, for instance, the earning was say 100 in 2009, and this was the P multiple in 2009, 43 times for Asian Paint, Britannia 22, Dabur 35, HUL 24, Pidilite 48, TCS 23. And for bank, it is price to book value 5.5 times, 3.26 times. This was the P multiple in 2009. Now look at 2026. The 43 P multiple become 57, 22 P multiple become 54, 35 P multiple became 42, 25 P multiple became 48, 48 P multiple became 64. TCS has dropped down because of recent performances. HDFC massive drop down from 5.5 times to 2.06 times, and Kotak Bank is also down. But what happened as far as earning growth is concerned? This is how earning grew from 2009 to 2026. 14% earning growth, but 57% for 58 P multiple. 18% earning growth, but 54 P multiple. Just 9% earning growth, 42 P multiple. 14% PAT growth, 48 P multiple. 20% earning growth, 64 P multiple. TCS, 14% earning growth, 18 time P multiple. Only HDFC Bank could do justice where the earning has been very, very good and the price to book value has come down. Same with Kotak Bank. But what is more interesting to look at earning from 2009 to
2019 for a 10-year period. Out of 14.44%, 18% came here, 23, 14, 9.2. And if you look at the P multiple, from this, for a 10-year period, earning grew 18% per annum. And because of that, the P multiple has went up from 43 times to 79 times. Here the earning grew 23% per annum. So P multiple has went up from 22 times to 54 times. Here the earning grew just 14%, but it went up from 35 times to 56 times because most FMCG companies were the darling of the market. HUL earning grew just 9.2%, but earning is profit growth, but P multiple became 72. Pidilite P multiple 48, earning was 23% per annum, but P multiple became 76. TCS 19.5%, decent earning growth, but P multiple was only 25. The reason is this, because TCS has a lot of promoter holding. The weightage of TCS in the index is very low, and because of that, passive funds allocation don't come to TCS, and FI don't allocate large amount of money to TCS. This is the one reason where the TCS earning growth has been decent, but P expansion was not exorbitant, it was normal. HDFC Bank got re-rated post 2009-10. But what is astonishing to look at this data, from 9 to 19, 18%, but just 8.7%. 23% to 10.7%. 14% to 3%. 9.2, 9.5%. 23% to 14%. 19.5% to 17, 7.3%. 25% to 21%. This is the only company which maintained the earning growth decently, and Kotak Bank as well. So when you look at the earning growth for a 15-year period, it looks very, very good. But when you break up between first 10 year and last 5 year, it gives a very, very different story. So the biggest challenge, in my opinion, for most of these companies will they able to maintain the earning growth? And we see lots of headwind to these companies going forward. So the bluest of blue chip, which we thought will remain blue chip, may or may not be true going forward. And here I will share some data with you guys. So guys, please look at this data. I captured this data from, actually I captured this data from 1999. And these are live data we captured. Okay. So I captured this data from 2000. I captured this from a pretty old period, and this is the time period actually start from 2004. Actually start from 1999. But from 2004, we have, these are historical numbers. So these are historical numbers. Okay, just look at this data. I want you to go carefully look at this data. This is 1st January 2004. If you were sitting on 1st January 2004, this was the Nifty level. This was the P multiple of the Nifty. This was the price to book value of Nifty, and this was the dividend yield of Nifty as on 1st January 2004. And this was the historical return, last 1 year, last 3 years, last 5 years, and last 10-year return of Nifty 50 as on 1st January 2004. So suppose you are an investor, you're sitting on 1st January 2004, and you're looking at Nifty numbers. You're looking at P multiple, you're looking at price to book value, you're looking at dividend yield, and you're looking at historical return as well. But this is the history. What happened after? These are future return. If you invested on 1st January 2004, then these are next 1 year, next 3 years, next 5 year, next 10 years return. And this is the scorecard maintained by me, which gives a very different perspective. And I'll talk about this to you, what is the meaning of that. So this is data from 2004 till 2026. So 1st April 2026. Now, first is P multiple. 19.7 P multiple. It means the P multiple is below 20. Price to book value is below 3.10.
and dividend yield close to 1.4. So I looked at the data. When was the P multiple last time below 20? So last time below 20 was here, and the historical return was this, and my calculation showed below 300. So whenever this data is below 300 and everything fall in place, then next time period you make decent money. So after that, next 1 year you made 22%, next 3 years you made 17.82%. Now if you look at this data, for instance, April 2020, P multiple below, it was a abnormal time. Historical return was very poor. Great time to put money. Similarly, if you look at data of past, like if you look at March 2016, P multiple below 20, price to book below 3.10, dividend yield above 1.4, and this number, which is my number created by me, is below 300, is 169. And if you invested on that day, then this is 1 year, 3 year CAGR, 5 year CAGR, 10 year CAGR. Similarly, we looked at data. If you look at this time period, where all the data was telling you buy, you should buy. But what is more important thing I'll share with you guys. So here are the numbers where all three parameters were looking very good, and our calculation, my model was also showing it below 300. It was a great time to look at investing. Suppose you look at here, next 1 year is 6% below par because the price to book was about 3.1, and 29. Everything was falling in place except this number. Okay. We'll see these data. For instance, now look at here. Price to book value, P multiple was very good. Price to book little higher. Dividend yield was very good, but historical number was below, is above 500, and that is the reason that market and performance struggle. So what we have witnessed that if you get all right, these right below 20, below 3.1, dividend yield close to 1, and this matrix below 300, then the next time, next 1 year, 3 year, 5 year, 10 years numbers looks very, very good. Uh, and here you look at this data, uh, market high P, little high P multiple, price to book high, dividend is low, but historical return was also very, very high. So what happened? Future numbers looked very, very challenging. And if you look at here, now look at this data point. Now, in this time period, everything was falling in place, but still 1 year return was low because this number was above 300. So whenever you see P multiple below 20, price to book below 3.10, and dividend yield 1.4 and above, and this total is below 300, then the next time period is a great time period for you as far as investment is concerned. I don't know what will happen over a 3 month or 6 month period, but if I look at data right now, these data are looking very, very good from a long-term investing perspective. P multiple below 20, price to book below 3.10, dividend yield close to 1.4, and this number, which is created by me, looks very, very good. And I can share this data about various indices. So for instance, let's look at IT. This data for IT is looking at 154. I'll explain to you everything. So here was a period where 10-year return of IT was below 10%, and this was below 300. Next 1 year looked challenging, but next 3, 5, 10-year returns were very good. So if you look at this data point, wherever IT return 10-year has been below 10%, and this number is below 300, then in future returns were very, very good. Look at this period as well. Now, what is happening in IT right now? 10-year return is below 10, is around 10%, and it is 154. We'll come to that little later. FMCG, if you look at FMCG sector, it's very interesting sector to look at. And we'll discuss this about a little detail. This is a 5 year CAGR historical. This is a 10-year CAGR historical. And this is my calculation. It is showing 881. So it was a time when you should be exiting FMCG because the number was 881, because next 1 year was this, next 3 year was this, next 5 year was this, and next 10 year was this. But by the way, IT, I'll tell you something very, very interesting.
If you look at IT index 29085, last time it was around the same number was this. So approximately 5 year IT number are flattish as far as performance is concerned. Now look at FMCG. When it was 20,145. Nifty Bank, Nifty IT, 20,145, and the number was 881. When this became 400, 345, number was 19,737. Now, if you look at data here, is 144. 5 year return 5.5%, 10 year return below 10%. I haven't seen, if you look at this data, FMCG companies' 10 year return was never ever less than 10%. This is the historical return. It means if you invested in 2005, by 2015, you deliver 21%. So from 2005 till date, except right now, for the last 21 years, FMCG companies' 10 year return was less than 10% only during COVID, only during here, and now witnessing here. It never happened like this, and total score is 144. If you look at bank, this is what the bank's numbers are looking. Same story, below 10%, good time to look at. And the most fascinating is gold. So if you look at gold return, 5 year return, when the gold's 5 year return has been negative, good time to invest because the future returns were this. And here come the 10 year return. When the gold's 10 year return was below 10%, great time to invest in gold. But there was a period where the gold return, 10 year return became 16, 17% here. If you look at 10 year return of gold, 20%, 19, 17, 18%, 17% to 20. And this, my total was coming 800, 900. Even 1 year delivered good return, but 3 year return, 5 year return, 10 year return was very, very challenging as far as gold is concerned. If you look at data for gold right now, the data for gold on 1st March was this 111. So 10 year return was 19.76, and that's why we have seen massive drop in the gold prices. Best time to invest in the gold is when 10 year returns are below 10%. If you ever invested in gold where 10 year returns were, these are all period where the 10 year returns were below 10%, and this number is below 300. You could look at future return. Here the numbers are above 300. You could look at a future return, the kind of money gold has made for you. Okay. Now I'll come back to, if you have anybody have a question, I'll answer that question, but I'll come back to my PPT. So when was historically we have this kind of situation where P multiple was below 20, dividend yield was above 1.39 to 1.4, price to book was below 3.10, and our VMFS model was below 300. The first time, like I'm going back to 20 years back, this was the period where everything fell in place. And if you invested during this period, then next 1 year's best return, 3 years, 5 years, and 10 year best return was this. Worst was this, and average was this. Then we had a similar situation here. Best return, worst return, average return for 1 year, 3 year, 5 year, and 10 year. Third incident happened here. 1 year worst, average, 3 year, 5 year, 10 year. Now what is happening? Highest gold scored is 111, auto 1020, bank 874, FMCG age 81. This VMFS score, IT 1029, Pharma 1061, Nifty 1239. Lowest gold is 134, VMFS number, auto minus 99, bank 34, FMCG 144, IT 91, Pharma minus 29, and Nifty 13. These are the average number. So in average, you make average return, but if you're able to enter when it is 300 below, then your chances of making money goes up quite substantially. And this is a current number. So average के comparison में current ये है. So gold is
from historical perspective, is at 95% premium. Auto 7% discount, bank 32% discount, FMCG 66% discount, IT 64% discount, Pharma 15% discount, and Nifty 35% discount. So one should look at Nifty 100%, one should look at Pharma 100%. About FMCG and IT, one need to be really, really careful. How does one go about investing? Banks, yes, BFSI looks very, very good from historical return perspective. I don't know when the war will get over. Very honestly, I have no clue. But when it will get over, I think uh, India's position will be very, very strong because after destruction, construction come, India will play a very. Uh, this is from my side, and I open this forum for Sanika. Anybody have any question? We can take questions of audiences. Yeah, Mr. Anupji, I've asked you unmute. You can ask your question. Sir, good morning. This is Anup Mukherjee from Noida. Your presentation was amazing. मतलब शायद इंडस्ट्री में इस तरह से डेटा ड्रिवन कोई नहीं देता सर. थोड़ा सा मैं ये समझना चाहूंगा, एक तो जो आपने ये 300 वाला जो डेटा दिया है, व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड इट, क्या है वो, मतलब थोड़ा उसका कैलकुलेशन क्या आप समझा पाएंगे? दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. और सर ये जो डेटा आप कलेक्ट करा है सर, इसका एक ट्यूटोरियल दीजिए ना, सो दैट वी कैन आल्सो लर्न सम insight on it. We can do it on ourselves. ये सीक्रेट गूज है सर. It is my 30 years of data collection. I have a fascination for collecting data, and this has happened after lots and lots of iteration, which I did, learning from the market, how the market predictions. Like this number below 300 looks very good for FMCG and IT, but does it mean someone need to go and buy these at that time? Answer is no. Infra, the number looked many times below 300. So just not these number. How do you interpret these number? Looking at what is happening in the industry, how things are changing. So this data has to be seen in the context in which it is being presented. So my advice is that my data will not be useful because the way I interpret data will be very different the way you will interpret. So that is my submission. Mr. Kamal, unmuted. You can ask a question. वेरी गुड मॉर्निंग सर. थैंक यू वेरी मच. Well, आपने इतना अच्छा सेशन अटेंड किया, इतना डीपली नॉलेज शेयर किया. थैंक यू वेरी मच सर. वही जो क्वेश्चन था उसी को मैं फर्दर बाइफरगेट करूंगा. इसमें आप मुझे ये डेटा मेरे मीन्स इसमें कैसे बेटर वे हम समझ सकते हैं, उसका कोई ट्रेनिंग या कुछ दे सकते हैं तो क्वाइट बेटर रहेगा हमारे लिए भी. तो इट विल बी क्या होगा कि हमें भी आगे जाके क्लाइंट को कन्विंस करने में इजी रहेगा. या मैं कमल जी ये बोल रहा हूँ आपको कि ये चीज जब भी मुझे इंटरेस्टिंग कोई चीज लगेगी, सो आई विल कम टू यू गाइस टू एक्सप्लेन कि ये है, कि ये अच्छा लग रहा है. जैसे इस ये आज वेबिनार का जो हमारा था वो काफी फंड हाउस से 2 फंड हाउस ने बाई कॉल दिया है. उसके 2 दिन पहले ही हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था, और हमारा मॉडल हमको 28 मार्च को ही चीज बोल दिया था. हमने तो बता दिया था, हमने उसी दिन प्लान कर लिया था कि वी नीड टू डू दिस फॉर एनीबडी हु फॉलो अस. तो ये हम आपको समय समय पे बताते रहेंगे. आप अटेंड करते रहिए हमारे वेबिनार, आपको जानकारी मिलती रहेगी. बट इसका ट्रेनिंग और ट्यूटोरियल नहीं हो सकता सर, क्योंकि ये इतना सिचुएशनल है ना. जैसे आज आईटी इंडस्ट्री है, तो अगर डेटा के हिसाब से प्योर जाऊं तो ये क्राई बाई है. बट सवाल उठता है कि कोई भी बिजनेस होता है उसके अंदर 90% वैल्यू आता है टर्मिनल वैल्यू से, कि बिजनेस यहां से अभी समझ लो 10% ही ग्रोथ करेगा. आईटी इंडस्ट्री में आज बहुत बड़ा चैलेंज है. वो पावर था, वो भी डिसअपियर हो गया. प्राइवेट ब्रांड आने लगे, लोगों की कंजम्पशन पैटर्न लोगों का पूरा चेंज हो गया है. तो अगर मैं रियलिटी में देखूं, मीडिया में देखूं, इन सारी इंडेक्स पे डेटा बहुत अच्छा दिखता है. तो आप इस डेटा को ब्लाइंडली नहीं देख सकते. तो आई एम वेरी केयरफुल कि इसका कहीं गलत यूज नहीं हो, गलत इंटरप्रिटेशन नहीं हो. ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों को बताना नहीं चाहता, दैट इज नॉट द इंटेंट. बट आई एम एक्सट्रीमली केयरफुल कि इसका गलत इंटेंट नहीं होना चाहिए. क्योंकि जैसे आपने सुना होगा शास्त्रों में कि ब्रह्मास्त्र या कोई भी अस्त्र ऋषि मुनि योग्य शिष्य को ही देते थे. उनको लगता है कि भाई ये हैंडल कर सकता है तो इसको दे दूं मैं. सो
आई एम नॉट मैं वो खाली एनालॉजी दे रहा हूँ, मैं उतना उतना महान नहीं हूं, मैं खाली एनालॉजी दे रहा हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड। सर आईटी में अभी क्या करना चाहिए? आईटी एंड एफएमसीजी में आप बोले कि वेट एंड वॉच करना है, तो थोड़ा टाइम वेट करके कल पैसा इन्वेस्ट करना है, या वीकेंड अभी इन्वेस्ट नहीं करना है आईटी में? नहीं देखिए, हाँ बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है कि जैसे एक फंड हाउस है इंडिया में जो आईटी में वेटेज बढ़ा रहा है, और एक फंड हाउस आईटी में वेटेज कम कर रहा है, ठीक है। अभी आप और मैं क्या करें एज ए इन्वेस्टर? तो जो फंड हाउस आईटी में वेट बढ़ा रहा है, सपोज आईटी अच्छा किया तो फंड हाउस का बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। लेकिन आईटी खराब गया तो फंड हाउस खराब दिखेगा। और जो फंड हाउस आईटी को बेच रहा है, अगर आईटी खराब चला तो वो अच्छा हीरो दिखेगा, वरना वो जीरो दिखेगा। तो इन्वेस्टिंग बिजनेस बाइनरी नहीं है कि अपने को हीरो दिखना है जीरो दिखना है। जब सिचुएशन क्लियरिटी नहीं होना तो आपको इक्वल वेट जाना चाहिए। तो आप वो फंड हाउस चूज करो जिनका आईटी में इक्वल वेट है, बिकॉज नोबडी नोज व्हाट विल हैपन। ओके। और जरूरी नहीं कि आपको आईटी में वैल्यू सर्च करना, आपको फार्मा में वैल्यू दिख रहा है, आपको बैंकिंग में वैल्यू दिख रहा है, तो वहां जाइए मेरे हिसाब से आप। थैंक यू वेरी मच सर। Ask Mr. Vijaya Yeah, Mantri to unmute. yeah. Hi, good morning. गुड It's a मॉर्निंग। wonderful session. Just I would like to appreciate once again. थैंक यू। Uh, Fascinate. I'm an NRI customer from Qatar. ओके। Just outside this, just would like to know your views on SIF and some or Gift City mutual So let me funds. explain you the gift city. As far as gift city is concerned, as far as taxation is concerned and currency risk is concerned, investing in direct mutual fund and investing in gift city is actually exactly the same. Because if you invest money in a gift city in dollar, the fund in gift city convert that money into INR and invest in Indian domicile fund. I think he's facing some network issue. He just joined back. Again, somebody created this kind of false narrative, which is not right. On the contrary, the expenses are no less, because Gift City Fund charges you whatever the number is. Then the Gift City Fund invests in underlying domestic fund direct plan. You have expenses of that as well. So total expenses to you through Gift City is equal to or sometime more through Gift City than you invest directly in Indian domicile mutual fund. Third is, as far as taxation is concerned, absolutely identical treatment. Yes, but the gift city provide you a convenience, less hassle as far as administration is concerned. That is the only convenience you get. But as far as return is concerned, taxation is concerned, currency risk is concerned, it is absolutely identical. So that is the one part. Second part is SIF, and I kept saying on various forum that in the financial services industry, it is not prudent to jump to innovation too fast. Let it stabilize, let it go through one or two ups and down cycle. Then the team will learn, the investing team will learn, because even for them, managing this kind of fund is a new thing. It is not the old thing. So, very honestly, I haven't recommended a single SIF to any of my investor yet. Also, Mr. Arun Chopra has asked this question. When you say it is the right time to invest in Nifty, is investing in more Nifty 50 the right option? No, I'm saying Nifty 50 is the most tracked indices. That's why we talk about Nifty. Else, otherwise, it is a worst performing indices. So it is a reference point we are saying to take. So in my opinion, you should invest in flexi cap fund. You should invest into well managed uh, healthcare fund. Look at banking and financial services fund. So that is my take. Not Nifty fund, very honestly. Got it. So, Mr. Parth, Deepak has asked this question that, hello, sir, can you please address how to navigate volatility through these times for SIP investors in mutual funds? Any mythological analogy for the same and how to basically help them? So mythological analogy is that Har Har Mahadev, everybody could be Mahadev. And the Mahadev is someone, everybody, when the great churning of ocean happened, people were searching for Amrit. So there was a fight between Dev, Asur and Asur. But before Amrit came Halahal.
That is a volatility. So everybody chasing for return, but before return come the volatility. So everybody is searching for Amrit, but before Amrit come the halal. But who can take the halal? With the Lord Shiva, Nilkant, who took the halal, but he didn't gulp it. He kept it under in his throat. And Ma Parvati, stopped it from going down the stomach. If it has gone down the stomach, God knows what would have happened. So that is the role of advisor and MFD to stop when the portfolio is down. If the portfolio is down, it's like halal in your neck. If you redeem, it goes into your stomach, it become permanent loss to you. Temporary loss become permanent loss to you. So anybody who's panicking, show them the same fund's NAV history. In past, the NAVs came down many times. Unlike a stock, the NAV always go up and ultimately you make money. So this is the one part. The second part is that what you can talk to people is that suppose the fund's NAV is 10 rupees and you are investing 10,000 rupees SIP, you get 1,000 rupees, 1,000 units. But suppose the fund's NAV become 8 rupees, the NAV drop 20%, but the number of unit goes up by 25%. Instead of 1,000 unit, you get 1,250 units. Similarly, suppose the fund's NAV come down from 10 rupees to 5 rupees, the NAV drop 50%, but the number of unit goes up by 100%. So I kept saying repeatedly, for SIP investor, good returns are good return, but bad returns are the best return. I did a podcast with somebody, and in that podcast, I showed the data that in 2008-9, when the market was going through tough time, uh, actually, I can show this data right now. I perhaps I'll have with me. So just a sec, please. May not be readily available, but I did a podcast with somebody, and in that podcast, I'll send the link to you. Since did WhatsApp me, I'll send the link of that podcast. In that podcast, I share the data from 2008 to 9. Actually, the worst period, your after like 14, 15 months, your investment is down 35% in absolute term, but your number of unit went up more than 100%. Okay. And when the NAV recovered, you are making 20% CAGR on the portfolio. So just keep that in mind. Yeah. Gold invest for 5 years. What is your suggestion? Not right now. Okay, and your views on energy sector? Look at from a 10-year perspective. Don't look at from, yes, Veena Prasad ji, this is right. With Rahul Jain, the podcast, which I did on I think around 2 weeks back. My solo podcast, not with Sunil Subramaniam Kshitish, but my solo podcast, Rahul Jain. You get the data there. In the Yes. meantime, Mr. Rajesh has asked this question. For gold, fundamentally, your model is showing excess return. However, looking at the de-dollarization theory, central bank buying, don't you think it can rise or hold prices longer in the present circumstances? I don't have no view. I go by data. I don't go by narratives. When silver was 100, everybody is saying it will go to $200. Mr. Bhaumik, I've tried unmuting you, but I'm not able to Yeah, do that. can you hear me? Yeah, Yes, yeah. yes, Bhaumik ji, boliye please. Namaskar, sir. Good morning. Yes, And good again, your morning. data is are always eye openers. So thanks for bringing out those data. सर एक ये जो भी मतलब एक जो भी डेटा है वो व्हाट वी आर कंपेयरिंग आवर डेटा फ्रॉम द 1990s और 90 मे बी 2000, राइट? द चैलेंज क्या Yes. हुआ है सर कि लास्ट 6 years में अमेरिका ने बहुत ज्यादा डॉलर प्रिंट कर दिया है। तो क्या होता है कि ये जो स्टैटिस्टिक्स होता है ना वो वी डोंट नो दैट्स गोइंग टू बी गेट रेप्लिकेटेड और नॉट बिकॉज ऑफ द डॉलर्स व्हाट यूएस हैज प्रिंटेड, राइट? सो मुझे लगता है ये डेटा को हमको वो भी कंसिडर करना पड़ेगा कि हाउ दिस एक्सेसिव डॉलर प्रिंटिंग इज गोइंग टू गेट इम्पेक्टेड विद दिस स्टैटिस्टिक्स and Your point is, particularly on the case of the gold and the equity, it may varies. That is what I personally feel, and I want your opinion. Yes, you are absolutely right, Bhaumik ji. So that's why I told this data has to be seen in the context, not blindly followed. The good bad part is that I don't follow this data only for last 5 6 years. I take data from 2004, and even before that, Nifty from 1999.
I take because Nifty 5-year code completed in 1990, started in 94. So first 5 year was in 1999. So I take data from 1999, not 5, 6 year. That is the point number one. Point number two is that we need to understand that every asset category is interconnected. If we see challenges on if for instance if the printing of currency comes down, then we'll see challenges on every asset category. It will have challenges on gold, it will have challenges on real estate as well. So the investing is interconnecting. It is just not one-way street. So just keep that in mind always. And this data has to be seen in the context. So I see only from Indian context that uh, we have a structural huge advantages. No other country have those kind of advantages that per capita income is rising, 5 to 6% GDP growth, 6 to 7% GDP growth. So Indian market is structurally a bull market long-term story. You will have, challenges 1 year, 2 year, 3 years because of this. And let's look at the situation right now. Interestingly, even in this situation, as far as India is concerned, there's absolutely no shortage of oil. Okay. And you will see even on LPG, Europe stopped buying LPG from Russia. India start buying, but it's a 40 days cycle. It doesn't happen overnight. So in 40 days cycle, we will be coming back to normalcy. So in my opinion, data has to be seen in the context, and I keep context in mind before, I come to Right. any conclusion. Yeah. But there will be an impact of the extra printing of dollars, right, sir, in the near term or long term? No, I don't think so. Indian markets will not have. Indian market go through some temporary ups and downs, but long term, no at all. So we have Thank you. so much inherent strength in our country. Yep, agree. Yeah. Thank you, sir. Thank you. Mohit, you can ask your question. I've unmuted you. All right, thank you. Vijay sir, it was great opportunity to hear you every time. I follow your LinkedIn very much. Uh, the question is, sir, investors are also understanding historical data कि अभी रुकने में फायदा है, अभी वैल्यू ठीक आ गए हैं, बट वो जो डर है ना कि यहाँ से 10% और गिरा तो उस फीलिंग को कैसे बचाएं या उस अर्ज को कैसे बचाएं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है सबके मन में। कोई 1 करोड़ पे बैठा है, एसेट एलोकेशन भी ठीक है, बट स्टिल दे आर स्पेकुलेटिंग कि ये 1 करोड़ पे ज्यादा डेंट में झेल नहीं पाऊंगा। तो हाउ टू सेटल दैट काइंड ऑफ अर्ज ऑफ इन्वेस्टर्स? इम्पॉसिबल है। प्रॉपर कम्युनिकेशन, कंटिन्यूस कम्युनिकेशन से आप उसको सेटल कर सकते हैं। इसमें दो तीन बड़े चैलेंजेस स्ट्रक्चरली। एक चैलेंज ये है कि इंडिया इज अ लो ट्रस्ट सोसाइटी वेयर वी ट्रस्ट बिग ब्रांड, बिग ऑर्गेनाइजेशन, बट और our morning walk uncle who have no stake in our well-being, and we don't trust people who are actually expert in their respective field. तो क्या होता है, डॉक्टर के बारे में बात करते हैं तो कोई मॉर्निंग वॉक पे बोलता है डॉक्टर चोर है, तो हम उसका भरोसा करते हैं डॉक्टर चोर है। ओके, this happen in every profession, so it is a big challenge. So everybody is expert in India except their own work. Second, what has happened is that uh, equity is a new asset category. It is not asset category like gold, which is like for with us for thousands of years, real estate 200 year, bank 200 year. ये 30-40 ईयर की इफेक्टिवली 20 साल की एसेट कैटेगरी है। तो एक जनरेशन को ट्रस्ट आने में समय लगेगा। आप देखिए कोई भी म्यूचुअल फंड काम कर रहा है, बिजनेस है, तो 20 साल पहले क्लाइंट का रिएक्शन एकदम अलग होता था। आजकल क्लाइंट का रिएक्शन थोड़ा ठीक होने लग गया है। सो इट इज अ जर्नी, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन इमीडिएटली। और अगर क्लाइंट इतना समझदार हो जाता तो किसी एडवाइजर की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। So it is our job on continuous basis to communicate, show hard data, show past return, show this was the best time to accumulate wealth, show them कि जो आपका म्यूचुअल फंड यूनिट्स है उसके अंडरलाइंग स्कीम है, उसके अंडरलाइंग कंपनीज है, उन कंपनी का रियल अर्निंग है, रियल स्ट्रेंथ है। सो एक मैं कार्डियोलॉजिस्ट को प्रेजेंटेशन कर रहा था तो किसी ने बोला कि मंत्री जी ये तो सब आपका पेपर है, म्यूचुअल फंड तो सारा पेपर है, आपका स्टॉक तो पेपर है, रियल एस्टेट रियल होता है।
सो द क्वेश्चन इज दैट, मैंने उनसे पूछा सर आप, ही वॉज देयर विद हिज स्पाउस, बोला सर आप भाभी जी के साथ हैं? बोला हाँ। मैं बोला आप शादीशुदा हैं? बोला हाँ जी। बोला प्रूफ क्या है उसका? हमारे सामने तो फेयर फेयर लिए नहीं ना आपने। आप हॉस्पिटल में जाते हो तो आप किस बेस पे आपको हॉस्पिटल में गार्ड अलाउ करता है? आपको हॉस्पिटल से सैलरी आती है किस बेसिस पे आती है? आप किसी का रिपोर्ट देखते हो तो क्या आपके सामने नस काट के खून निकाल के देखते हो? क्या किस बेस पे देखते हो? आप जिस हॉस्पिटल में काम कर रहे हो उस हॉस्पिटल के मालिक कौन है? तो XYZ मालिक है। मेरा जाके देखो MCA वेबसाइट पे उस स्टॉक्स, आपका हॉस्पिटल तो रियल है ना, आपके मालिक भी रियल है, और उन मालिक के अंदर 3 फार्मास्यूटिकल फंड भी आपका स्टॉक हॉस्पिटल लेके बैठे। तो पेपर नहीं है आपका पार्ट, आपके हॉस्पिटल का पार्ट ओनरशिप। आप बोलते हो आप हॉस्पिटल में काम करते हो, आपको हॉस्पिटल चूस रहा पूरा, तो कौन पैसे बना रहा है? आपका शेयर होल्डर्स पैसे बना रहा है। और वो शेयर होल्डर्स में ये फार्मास्यूटिकल फंड भी है, ये नॉर्मल फंड भी है। आप देख लो जाके, आप इमीडिएटली उनको दिखा सकते हो चीजें। तो थोड़ा अगर पहले प्रिपरेशन करके जाओ क्लाइंट से मिलने के लिए कि क्या क्या बैकग्राउंड है, तो आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा। मनीष जी सवाल पूछ रहे, मनीष कपूर जी। नमस्कार विजय सर। नमस्कार सर। कैसे हैं सर? हाउ आर यू? मेरा ऑल वेल। एक मेरा एक क्वेश्चन था सर। हेल्थ केयर, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज फंड, एफएमसीजी फंड और एक आईटी वाला फंड, इन चारों में से अगर आप इफ गिवन कि अभी किस पे स्टार्ट करना चाहिए इन्वेस्टमेंट, फ्रेश इन्वेस्टमेंट? पहला तो आपको अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से बात करना चाहिए, और उनके थ्रू आपको, मेरे हिसाब से नंबर 1 चॉइस मेरी हेल्थ केयर में, सेकंड BFSI है। ओके। और अभी आईटी में जैसे होता है फंड, तो उसमें अभी रुक के लगाए लमसम अगर? हाई रिस्क हाई रिस्क हाई रिटर्न। हाई रिस्क हाई रिटर्न। तो सो दैट इज अ अगर कॉल यू अपन नीड टू टेक। अगर किसी एएमसी स्पेसिफिक बात करें, तो कोई पर्सनलाइज अगर कोई एएमसी नहीं नहीं, कोई भी, बाय एंड बैंकिंग लार्ज में, आप, इसमें आईटी में? नहीं IT में कोई भी 3-4 कोई भी ले सकते हैं, अच्छे फंड हाउसेस हैं। आई विल नॉट टेक नेम ऑफ एनी फंड हाउस। टाटा डिजिटल को कैसे आप रेट करते हैं? नहीं, मैं कोई फंड हाउस का नाम नहीं लूंगा सर, प्लीज माफी चाहता हूँ उसके लिए मैं। अच्छा, नहीं नहीं, मैं बिकॉज मेरा ऑलरेडी था तो उसमें एक्सपोजर बढ़ाने के हिसाब से मैं सोच रहा था, बिकॉज आई नो यू पर्सनली, आई यू आल्सो नो मी तो पर्सनली। आप मेरे को पर्सनली बात कर लो ना, अपन बात कर लेंगे अलग चलिए से चलिए, इसमें। थैंक यू सो मच सर। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। अभी तो गुड आफ्टरनून हो गया सर। गुड मेरा सर आफ्टरनून दो हो गया। क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। सर, जो आईटी में आपने जो बताया डेटा, जो 2016 से 300 के जो आपका क्रॉस ओवर होएगा, तो 5, 10, 15 ईयर्स का जो डेटा आप बता रहे हैं, लेकिन इन बिटवीन एआई और जो डॉलर का भी डेप्रिसिएशन है, तो वो डेटा फिर कैसे उसको जस्टिफाई होएगा? और सेकंड क्वेश्चन उसके रिलेटेड, बैंकिंग में भी जो है आपने 2016 का बताया, और एचडीएफसी बैंक तो हर म्यूचुअल फंड के उसमें रहता ही है, लेकिन सडनली आपने देखा रहेगा लास्ट मंथ में अतानु इज रिजाइन, सी इज ड्रॉप 10 to 15%। तो ये जो डेटा के साथ कैसे हम उसको जस्टिफाई, थोड़ा उसमें आप बता सके, गुड। देखिए, BFSI फंड के अंदर खाली बैंकिंग नहीं है, कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज ही है, जो कि ऑफ बैलेंस शीट आइटम अप होता है पूरा का पूरा। और आप देखो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है इंडियन BFSI फंड ने, इंडिया के अंदर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, तो आप देख सकते हैं। और मेरे हिसाब से कोई ग्रेट फ्रेंचाइज के अंदर ऐसी तकलीफ होती है, इज अ ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी। 2016 में आपको याद होगा इन्फोसिस के अंदर कुछ लीडरशिप चेंज हो रहा था उस टाइम। ओके, उस टाइम कोई इन्फोसिस लिया होता तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आता अगले 5 साल तक। सो वेन यू सी ग्रेट फ्रेंचाइज इज गोइंग थ्रू डिफिकल्ट टाइम, मेरे हिसाब से उसकी तरफ देखना चाहिए। बट आई एम नो वन टू रिकमेंड इंडिविजुअल स्टॉक्स टू एनीबडी। AI की आपकी बात बात सही, बट मैं आपको बताता हूं कि AI से कोई इंडस्ट्री खत्म नहीं होगी। आपको 2 पॉइंट बताता हूं मैं। जैसे रेफ्रिजरेशन का इन्वेंशन हुआ था, रेफ्रिजरेटर का इन्वेंशन होने के बाद शिकागो बिकेम बुचर ऑफ द वर्ल्ड, और न्यूजीलैंड का लैम्ब लंदन में आने लग गया। उसके अलावा अगर आप कंटेनर का इन्वेंशन देखो, तो कंटेनर का इन्वेंशन होने से शिपिंग पे जो माल आता था उसमें चोरी कम हो गई, खराबी कम हो गई, तो पूरा वेस्ट डी इंडस्ट्रियलाइज हो गया, और पूरा एशिया इंडस्ट्रियलाइज हो गया, बिकॉज रॉ मटेरियल कुड बी ट्रांसपोर्टेड इजीली इन कंटेनर, सेम वे फिनिश कुड बी ट्रांसपोर्टेड इजीली। तो AI से अबंडेंस होगा,
लेकिन आपको ये देखना है कि उससे इनेबल कौन होगा। तो एआई किसी इंडस्ट्री को खत्म करने वाली नहीं है। लेकिन सर थोड़ा टाइम लग सकता है उसको, मैं 2016 है तो 26 है तो देखिए, माइट कोई भी। भी डिस्ट्रक्शन और कोई भी बड़ा पैसा कभी भी प्रिडिक्टेबल पाथ पे नहीं बनता है, ध्यान रखिए आप। थोड़ा टाइम देना ही पड़ेगा हमें। नहीं नहीं, जो जो दिखता है ना प्रिडिक्टेबल पाथ पे कभी नहीं होता है। ओके। इट इज ऑलवेज अनप्रिडिक्टेबल पाथ पे होता है। बड़ा पैसा और बड़ा नुकसान कभी प्रिडिक्टेबल पाथ पे नहीं। प्रिडिक्टेबल पाथ पे होता तो आदमी पहले एडजस्ट कर लेते हैं ना। थैंक यू वेरी मच सर। Hi Vijay sir, this is actually Nemish Mehta. I have logged in from my staff's this thing. That's why the name ओके। Shailesh appears. अच्छा सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली थैंकफुल कि आपने इतना अच्छा इंसाइट दिया है. सेकेंडली आई वांटेड टू आस्क यू कि यू मेंशन दैट कि अबाउट 10,000 crore का जब भी मार्केट कैप कंपनी का होता है, देयर वर ओनली टू कंपनीज which has provided return of CAGR of more than 25%, and about 50,000 crore market cap, none of the companies had delivered that kind of return. So does that mean that we should be investing in small caps and micro cap only, which are below 10,000 crore? That is my first question. And my second question is that instead of investing in different mutual funds, would you suggest to invest through Nifty ETF? Because Nifty ETF also otherwise provides the return between 11 to 13%. So these were my two questions. So if you are looking at 11 to 13% return, then large cap fund, Nifty ETF, Nifty index fund are a great opportunity. But I'm suggesting to you that don't buy ETF, buy index fund, because ETF को जो buy sell spread है ना, volatile day को बहुत खतरनाक हो जाता है। Right. इसका जरूर ध्यान रखें। सेकंड, वेरी गुड क्वेश्चन यू आस्क मी, बिकॉज आई वांटेड समवन टू आस्क दैट क्वेश्चन। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि 10,000 करोड़ मार्केट कैप के बाद दो कंपनी और 50,000 करोड़ के बाद एक भी कंपनी रिटर्न नहीं दिया। उसका रीजन क्या है? आप थोड़ा डीपली सोचो। आज कोई भी एएमसी की सीईओ से मिलो आप, या फंड मैनेजर से मिलो, या सेल्स वाले से मिलो, वो बात करते हैं पैसिव, एआईएफ, गिफ्ट सिटी, असेट एलोकेशन, बैलेंस एडवांटेज फंड, मल्टी एसेट फंड, फंड ऑफ फंड। ये बातें ज्यादा होती है आजकल। आपने एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनाई है, द नंबर वन रीजन टू क्रिएट अल्फा, उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि इंडिया में वेल्थ बन रही है 1,000 से 10,000 करोड़ की कंपनीज में। और जो बड़ी वेल्थ बनाने वाली कंपनी है, व्हेन दे स्टार्ट द जर्नी, दे आर नॉट द क्लीनेस्ट ऑफ द कंपनी। जब लुपिन में आर राकेश झुंझुनवाला जी ने पैसा डाला ना, इट वाज नॉट द क्लीनेस्ट ऑफ द कंपनी एट दैट टाइम फ्रॉम द स्टैंड ग्लोबल पर्सपेक्टिव। सो इंडियन फंड मैनेजर में क्या हो गया सर कि अभी 5-6 लाख रुपया साल का पैसा आता फंड में। एएमसी लिस्टेड होगी, काफी बोर्ड मेंबर है, सीआईओ है, सीईओ है। तो फंड मैनेजर क्या करते हैं, एक दूसरे को मिमिक करने लग गए, इंडेक्स को मिमिक करने लग गए। इट इज perfectly all right to fail conventionally than to succeed unconventionally। तो ये कहानी हो रही है। 5-5 करोड़ की, 3-3 करोड़ की सैलरी है, बोनस है, सॉप है। नो फंड मैनेजर वांट टू अंडर परफॉर्म इवन फॉर अ डे। और जब तक आप अंडर परफॉर्मेंस करने की ताकत नहीं रख सकते हो, आपका आउट परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकता। फॉर अंडर परफॉर्म आउट परफॉर्मेंस के लिए आपको एक्टिव बैट्स लेना पड़ता है, और आपका एक्टिव बैट्स गलत जा सकता है। आप में वो गट्स होना चाहिए कि आई कैन अंडर परफॉर्म फॉर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। ओके, वो आज लॉन्ग टर्म विजन किसी का भी नहीं है। क्योंकि आज किसी फंड ने अंडर परफॉर्म किया 1 साल तक, और मार्केट में 5-6 लाख करोड़ आया, और उस फंड हाउस का नेट सेल्स नेगेटिव हो रहा है, तो उसका शेयर प्राइस पे इम्पैक्ट आएगा, मार्केट शेयर पे इम्पैक्ट आएगा, उसके बोर्ड पे सवाल किए जाएंगे, सीईओ सवाल करेगा फंड मैनेजर, सीआईओ सवाल करेगा फंड मैनेजर से। तो क्या हो रहा है, ये रीजन है। इंडिया में सबसे ज्यादा पैसा व्हेन द कंपनी बिकमिंग बिगर तब बना है, नॉट व्हेन द कंपनी बिकम बिग। तो अभी सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूं कि 90% प्लस फंड मैनेजर को एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आउट परफॉर्म कर सकता है, प्रोवाइडेड यू फॉलो राइट स्ट्रेटेजी। आज मैंने सुबह सुबह मेरे क्लाइंट का परफॉर्मेंस क्या है, वेटेड एवरेज, वो आज नंबर डाला मैंने सारे क्लाइंट का।
मेरे जो भी क्लाइंट है, जितना मेरे एयूएम है, एयूएम को लिया, स्कीम को लिया, फिर वेटेड एवरेज लिया, फिर रिटर्न दिखाया, निफ्टी 50 ने ये दिया, निफ्टी 500 ने ये दिया, और मेरे क्लाइंट का पैसा ये बना, वेटेड एवरेज दिया। पॉसिबल है आज के तारीख में। तो बहुत आज की तारीख में, इन टुडेज वर्ल्ड, इट इज नॉट डिफिकल्ट टू आउट परफॉर्म 90% ऑफ द फंड मैनेजर। But sir, you didn't answer my question that, I would say, shall we go ahead only with the investments in micro cap and small cap according to your analysis, I'm saying. नहीं नहीं, बहुत अच्छा आपका सवाल है। तो सर ऐसा है कि वो एक्सीडेंट भी ज्यादा होते हैं। हाँ, I understand. तो आपको आज की तारीख में आउटस्टैंडिंग स्मॉल एंड मिड कैप फंड मैनेजर को ढूंढना है, और अगर वो नहीं कर पाए तो आपको थीमेटिक फंड से पैसा बनाना है। Right. क्योंकि क्या हो गया, बिकॉज ऑफ सो मच कंप्लायंस एंड एवरीथिंग। सपोज आज आईटी 8% है इंडेक्स में, सपोज करो, कोई जीरो जाएगा ही नहीं। सपोज आज हेल्थ केयर 6% है इंडेक्स में, सपोज करो, आपका कंप्लायंस वाला उससे 8 से 10% ऊपर जाने ही देगा नहीं। तो आप जैसे कोई फंड हाउस फंड लेके आता है, कोई बोलता है एनर्जी फंड लेके आया, कोई मैन्युफैक्चरिंग फंड लेके आया, कोई क्या फंड लेके आया, ठीक है। वो बोलते हैं हमारा हाई कन्विक्शन आइडिया है। चलो अच्छी बात है, हाई कन्विक्शन आइडिया है। सीधा सवाल करने का कि हाई कन्विक्शन आइडिया है, तो आपके एग्जिस्टिंग फंड में वो हाई कन्विक्शन आइडिया का कितना ओवरवेट है, और ओवरवेट नहीं है तो क्यों नहीं है, आपको कहानी मालूम पड़ जाएगी। तो बहुत सिंपल है। यू लुक एट, अभी किसी ने टीवी पे आके बोला, किसी फंड के फाउंडर ने, सीईओ कम वट एवर यू कॉल हिम, उसने बोला कि दिस इज नॉट द टाइम टू, ऐसा कुछ बोला कि कैश में रहने का है, थोड़ा समय रहने का कैश में है, सब बात किया, कैश में रहना चाहिए। उसका फंड फुली इन्वेस्टेड है, तो कैश में कहाँ बैठा भाई, वो 31 मार्च को उसका फुली फंड इन्वेस्टेड है। सिमिलरली आप देखो कि हाई कन्विक्शन आइडिया किधर है। कोई बोलता है कि वी आर वेरी पॉजिटिव ऑन हेल्थ केयर सेक्टर, तो एक्चुअली इसके पोर्टफोलियो में हेल्थ केयर सेक्टर का ओवरवेट कितना है? अगर 6 से 8% है तो दैट इज नॉट वेरी पॉजिटिव। 6 से 10%, 15%, 16% रहा ना, तो ही हाई कन्विक्शन आइडिया होता है। एंड यू आपको बहुत, आज की तारीख में आप सिंथेटिक बास्केट क्रिएट करके आप 90% फंड को आउट परफॉर्म कर सकते हो। मैंने 1 अप्रैल 2025 को एक लिस्ट दी है फंड्स की, और उसके अगेंस्ट से मेरी बास्केट दी है। मैंने टॉप रेटेड फंड लिए हैं, मैंने हाईएस्ट रिटर्न वाले फंड लिए हैं, मैंने निफ्टी 50 लिया, निफ्टी 500 लिया है, और मेरे 10 फंड मैंने बताए हैं। एंड दोज 10 फंड नॉर्मल प्लान में हैज आउट परफॉर्म निफ्टी इंडेक्स फंड बाय 3% इन लास्ट 1 ईयर। तो आज मुश्किल नहीं है सर, थोड़ा अलग तरह की सोच करनी चाहिए मेरे हिसाब से। And sir, the last thing, आप ये सब जो डेटा कलेक्शन करते हो since last 25-30 years plus, do you, I would say, recommend any software और वेबसाइट जहाँ से हम लोग को ये कोई डेटा अवेलेबल हो सकता है? नहीं सर, मैं डेटा कभी अवेलेबल नहीं कराऊंगा किसी को, क्योंकि ये शस्त्र ऐसा है कि आप बिना जाने पहचाने किसी के हाथ में दे नहीं सकते। वो आपने बताया ब्रह्मास्त्र है. हाँ, तो वो गलत, वो एनालॉजी बहुत गलत है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि I understand. क्योंकि Thank you. सर उसको किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करना है मुझे मालूम है सर, क्योंकि मैं एक एक डेटा पॉइंट को जानता हूँ। Right. Thank you very much, sir. Saurabh Oza is unmuted. सर नमस्ते। नमस्ते। सॉरी, मेरी गलती से हो गया था, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। अरे सर नहीं, आप, प्लीज 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 डोंट से दैट, डोंट से दैट। सर या सर, थैंक यू। सर आप क्रूड, इन्फ्लेशन और डेट मार्केट में सर थोड़ा प्रकाश डालेंगे? देखिए, मेरे थैंक हिसाब यू। से डेट 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 में रिटर्न अच्छा बनेगा, क्योंकि डेट अभी रीजनेबली वैल्यूड है, और डेट में ज़्यादा ध्यान शॉर्ट टर्म पे रखना चाहिए फिलहाल, मतलब शॉर्ट टू मीडियम टर्म। तो डेट 7% के आसपास आपको रिटर्न बना के दे देगा। इन्फ्लेशन दुनिया में
कम नहीं होने वाला है। इन्फ्लेशन दुनिया में बढ़ने वाला है, लोग कितना भी बोलें, क्योंकि अगर पिछले 30-40 सालों 20 सालों से खासकर 100 रुपए की चीज चाइना ने 80 रुपए में दुनिया में डिलीवर की है। आने वाले पीरियड में वी आर पीपल गोइंग टू नियर सोर्सिंग, ये सब हो रहा है, तो कॉस्ट बढ़ेगी हर चीज की। ओके, तो वो इतना आसान नहीं रहने वाला है। और एनर्जी प्राइजेस मेरे हिसाब से स्टेबल रहेंगे, इस लेवल से ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 50% एनर्जी प्राइजेस बढ़ गया है। बट एक बात देखिए कि आने वाले पीरियड में मोर एंड मोर अल्टरनेट एनर्जी की तरफ बहुत बड़ा फोकस आने वाला है। तो कोई भी कमोडिटी का अगर बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ जाता है तो उसका अल्टरनेट, आप देखिए उसका अल्टरनेट आएगा। जैसे पीएनजी है, पीएनजी अल्टरनेट नहीं था कुछ सालों पहले। मीथेन गैस इंडिया में बहुत होती है, अभी हर हाउस होल्ड के अंदर पीएनजी जा सकती है। सो आपका जो एलपीजी पे, जैसे केरोसिन को एलपीजी ने रिप्लेस कर दिया, आने वाले पीरियड में काफी हद तक काफी एलपीजी को एलएनजी रिप्लेस कर देगा। तो अल्टरनेट आपको अपॉर्चुनिटी बहुत मिलने वाली है, मोलासिस से बन सकता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसके ऊपर मुझे जाने का कोई डर नहीं लगता। थैंक यू सर। विकास जी। I've unmuted Mr. Vikas Sri also, and yeah. गुड हाँ, आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। विकास गुप्ता। विकास जी बोलिए। सर आपकी डाटा क्रंचिंग तो देख के मजा आ जाता है सर। जब भी आपके हम अटेंड करते हैं, मैं आपके पर्टिकुलरली यूट्यूब के सारे आपको मैंने सब्सक्राइब कर रखा है, तो आपकी डाटा क्रंचिंग बहुत बढ़िया होती है। मुझे सर एक चीज बैंकिंग के बारे में आपसे पूछना है। जैसे आजकल जो आ रहा है कि आरबीआई ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने बैंकों के ऊपर थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स के ऊपर काफी जो चेंजेस आने वाले हैं 1 जून से, तो उसके अंदर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के बारे में आ रहा है। और दूसरा जो सोशल मीडिया पे काफी आ रहा है कि अ, आगे इसके अंदर पोर्टेबिलिटी शुरू करने जा रहे हैं अकाउंट्स के लिए, तो इससे बैंकिंग के रेवेन्यू पे काफी फर्क पड़ेगा। मैं इसके नहीं, मुझे नहीं लगता है कि फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, मुझे नहीं लगता है। क्योंकि क्योंकि देखिए, हाँ, जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं, इनका अगर आप रेवेन्यू देखो, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट से काफी अच्छा शेयर है उनके पास। और पर्टिकुलरली फाइनेंस मिनिस्टर ने भी पिछले बजट में बोला था लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, काफी स्ट्रिक्ट होने जा रहे हैं कि जो भी बैंकिंग ये दे रहे हैं, तो उससे रेवेन्यू पे फर्क आपको क्या लगता है? आप देखिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉन्ड है ना, हाँ जी। उसका नंबर 1 बायर इंश्योरेंस कंपनीज होता है। अच्छा बस इतना समझ लीजिए आप। अच्छा, तो मतलब इतना ज्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं होने वाली। इंश्योरेंस इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी अगर आप बेचना बंद करो, क्या करोगे? इंश्योरेंस बेचना तो पड़ेगा ना। थैंक यू सर। now आलो कैन आस्क नाउ। सर यस एक्चुअली प्लीज। गलती से लग रहा है रेज हो गया है, बट क्वेश्चन यही रहेगा कि सर जितने भी स्मॉल कैप है सब कंसोलिडेट करके क्या रेकमेंड फंड में ले आने बोलूं सबको? नहीं देखिए, अभी तो बी वेरी ऑनेस्टली स्मॉल एंड मिड कैप भी, अभी जो मेरा मैट्रिक्स है उसमें वो 600-700 का नंबर दिखा रहा है अभी भी। ओके, तो ठीक है। मैं तो अभी फिलहाल बहुत चैलेंजिंग लग रहा मुझे अभी भी। अच्छा, एक आनंद जी का लास्ट सवाल ले लो, सनिका Yeah, प्लीज। I've asked Mr. Anand also to unmute. Hello, sir. Thank you for allowing me to ask you a question. Sir, अगर investment देखा जाए, suppose if we want to invest at this point of time, तो sir क्या सेक्टर पे बिल्डअप कर सकते हैं? मतलब व्हाट शुड बी आवर एलोकेशन, कि कहाँ कैसे बिल्डअप कर सकते हैं, विच विल बी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टर्म, नॉट शॉर्ट टर्म, बट एक कॉर्पस अच्छा बना सकते हैं? बिकॉज समटाइम्स पीपल से कि अगर मार्केट अच्छा गिरता है तो देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द नेक्स्ट 2-3 years, 5 years. So according to that, what is your suggestion? So one is you look at diversified flexi cap fund. Second, you should look at, if you want to look at thematic fund, look at healthcare fund. And third, you could look at BFSI. Fourth, you can look at manufacturing, but everything have a long-term view. And do investment gradually. Don't do investment at one go. So this is not the time to invest in one bulk. Well, not at all.
And so the current market people actually, I'm not very keen on not understanding very much on astrology and all, but बहुत सारी चीजें ऐसे भी दिखने में आए हैं that this year is supposed to be the war year. I can. So I can. Anandji, I'll tell you, and you should use it. On 20th February, there was a World Astrologers Conference in Dubai. Yeah. And they got stuck there. Okay? Anybody who give about these things, just show them that when was the Astrologers Conference and what happened there. Okay, last question we take from Tushar Adhikari, then we close it out. Thank you, Vijay sir. Thank you. Thank you. तुषार जी इसका लास्ट क्वेश्चन ले लो। नमस्कार सर। नमस्कार सर लाइफ इंश्योरेंस के बारे में कुछ बोलोगे सर? हाँ? लाइफ इंश्योरेंस क्या मतलब इज अ ग्रेट प्रोडक्ट, अगर ढंग का बेचा जाए तो लाइक टर्म प्लान बेचना चाहिए, गोल प्लानिंग के हिसाब से करना चाहिए, इज अ ग्रेट प्रोडक्ट टू इन्वेस्ट। ओके सर। ओके सर, आपके मतलब ये आपका जो कलकत्ता में प्रोग्राम अटेंड करना चाहते हैं, आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे जो डेटा कभी हमने देखा नहीं है, कोई ऐसे प्रोवाइड नहीं करता है ऐसे डेटा। तो सर अगर कुछ हुआ तो बोलिएगा सर। आप लोकल एसोसिएशन को बोलो, लोकल म्यूचुअल फंड को बोलो कि एसोसिएशन के थ्रू मुझे बुलाए, मैं आ जाऊंगा आप लोगों को बात करने के लिए। ठीक है सर। ओके, थैंक यू सर। कोई भी सिटी में बुलवाना, आप लोकल एएमसी को बोलो, जिससे आपका अच्छा धंधा होता है। पहला आपकी हर जगह एमएफडी की एसोसिएशन होती है, अलग अलग ग्रुप होते हैं, बोलो कि सर को बुलवाना है, सुनना है, आ जाएंगे हम। ओके थैंक यू सर। Thank you very much. So thank you. So thank you very much everyone for attending this webinar, and we will keep doing it on continuous basis. Over to you, Sanika. Thank you everyone. I've put the question, our email ID in the chat box. If anyone wants to reach out, they can reach out.